are live now. Okay. Right. Can you send me the link? We are live, Aksha. You may start now. Okay. May I start? Yes, please. Okay. So we are good to go now. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants joining us for today's webinar on human rights under siege. I'm 𝗥𝗚𝗚𝗛𝗏 𝗨𝗡𝗗𝗥, Secretary of Advertisement at the Law Student Council, and I'm honored to be your host for today's insightful discussion. I'm grateful to our guest speaker, Syed Abdullah Anwer, for sharing his expertise with us today, and I look forward to a thought-provoking discussions. It is our honor to introduce Syed Abdullah Anwer. He is an advocate at the High Court, arbitrator mediator at the Chartered Institute of Arbitrator, and human rights lawyer. As an associate at the Tahota Law Firm, Mr. Anwer brings a wealth of expertise in legal matters. His distinguished career has spanned various roles, including former senior research fellow at Mantaq Center for Research with the National Assembly of Pakistan, former partner at the International Legal Consultants, and former research officer at the National Defense University ISSRA. With this impressive background, Mr. Anwer offers a unique blend of legal acumen and in-depth knowledge of the international issues, making him an expertly qualified commentator on the Gaza crisis. We are privileged to have him share with his insights us today. Let us commence the webinar and engage in a productive and enlightening discussion. Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, how are you? Any additional thoughts or insights to share? Walaikum Salam. Thank you so much for such a wonderful introduction. I just want to thank the team. आपके president साहब जो है जनाब शहीर साहब, he has always remained a very close friend and working associate. तो और आपकी माशाल्लाह बाकी भी लॉ स्टूडेंट काउंसिल काफी मतलब आप लोगों का काम माशाल्लाह it's amazing. You guys are one of the leading council, so it's always a privilege to talk to you guys. Thank you so much, sir. Sir, shall we start the question section? Please go ahead. What is the context of current crisis in Gaza, and why are there serious concerns regarding human rights violation? All right. So you've talked about context side of what's the conflict going on right now, and what's the background of what we are currently witnessing. So this is something that I stress upon. और मैं जब भी इस पे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई पूरी तस्वीर को देखो, सिर्फ October 7th से आगे देखा मत. And this is something that the Israelis like to lead into. कि पूरी जो तारीख है वो शुरू ही October 7 के बाद हुई है और बहुत बड़ा जुल्म हो गया और 1000 या 1300 जितने भी इनके नंबर्स हैं जो ये कम्युनिकेट करते हैं, इतने लोग हमारे हमास ने क्या कहते हैं मार दिए, तो लिहाजा उसकी रिटेलिएशन में अब वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स. और हम लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं गजा के अंदर और वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम में, सब जस्टिफाइड है. और फिर वहां से वो अपनी कहानी और उदार लेके आगे चलते. सो if I were to give a basic statement, the Israelis base their ideology on a statement which is that Palestine or this area that they're currently inside of was a land without a people for a people without a land. और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए भी बोली है, ये बिल्कुल झूठी स्टेटमेंट है जो ज़ायनिस्ट प्रोपोगेट करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं आगे पीछे कि भाई ये एक खाली जमीन थी उन लोगों के लिए जिनकी कोई जमीन नहीं थी, i.e. being themselves Jews of Europe. और ये बेसिकली इन्होंने बेसिस बनाई है बाद में जो सारे इन्होंने जुल्म किए हैं और ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशंस की हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए बेसिकली. सो एक तो मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि पैलेस्टाइन है क्या और उसकी बेसिस क्या है, जो कि बार बार ज़ायनिस्ट उसको डिस्क्रेडिट करते हैं और उसको गायब कर देते हैं तारीख से. पैलेस्टाइन एक रीजन है जो कि एग्जिस्ट करता है सिंस मिलेनिया.
Pehle, in the times of ancient Egypt, it was called Canaan. The people that lived over there were called Canaanites. Afterwards, the Greek historian Herodotus, in his book The Histories, actually refers to this place as Palestine. It was a Roman province in the second BCE called Syria Palestina. And at the time of the Muslim conquest of Palestine, it was called Palestina Prima by the Byzantines. The Arabs later Arabicized it to Palestine as we know it today. And then there was a continuous 1,000-year period almost of Muslim rule under the Umayyads, Abbasids, Tuluni, Ikhshidi, uh, the Seljuks, Fatimids, Ayyubids, Mamluks, till the end of the Ottoman era. Now, at the end of the Ottoman era, what we see is that the great powers after the world wars divide this area into mandates. So there's the mandate of Mesopotamia, which currently has Iraq, and then there's the mandate of Palestine. And then there is a Balfour Declaration. मैं जानता हूँ आप लोगों ने सुनी होगी Balfour Declaration क्या है और क्या हुई थी. But just to give it context, आर्थर बैल्फोर जो था आपका इंग्लैंड का फॉरेन मिनिस्टर, वो लॉर्ड लियोनेल रॉथशील्ड या रॉथचाइल्ड को लिखता है कि हम वी हैव द इंटेंशन टू हेल्प यू एंड वी वांट द एस्टैब्लिशमेंट इनसाइड ऑफ पैलेस्टाइन ए नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल. ये बेसिकली उसके अल्फाज हैं. उस तो वो खत है बेसिकली. अगर आप जाके गूगल पे निकाल भी लें तो उसके अल्फाज ये हैं. इम्प्लिसिटली और इम्प्लाइडली उसने रिकग्नाइज किया कि एक जगह है जहां जिसका नाम पैलेस्टाइन है, बट उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि हम लोग जूइश पीपल के लिए एक नेशनल होम क्रिएट करना चाहते हैं. और यहाँ पे बेसिकली बैल्फोर डिक्लेरेशन इधर कंफ्यूजन पैदा करती है. वो क्या है कंफ्यूजन? कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी और जो आपकी एथनिक आइडेंटिटी है उसको कन्फ्लेट और कंफ्यूज कर दिया जाता है. एंड दिस बेसिकली हैपेंस. आपको पता होना चाहिए कि जुडाइज्म किसी और दीन की तरह इट्स रिलीजन. देयर आर सेफार्डिक जूज, कफकाजी जूज, मिजराही जूज, यूरोपियंस, ईस्टर्न यूरोपियन जूज, बुखारन जूज, इटालियन जूज, इथोपियन जूज. मतलब हर तरह की एथनिसिटी के अंदर आपको जूज मिलते हैं. So what the Zionists want to claim is कि no, a Jew is an ethnic identity जो कि अपने आप को ये लिंक करते हैं अपनी जमीन के साथ, जो कि क्लेम करते हैं इनसाइड ऑफ पैलेस्टाइन कि होली लैंड है, हम प्रॉमिस्ड पीपल हैं, हम लोगों को मिलना है और हम लोगों ने यहाँ पे जाना है. एंड देन दे सॉर्ट ऑफ जस्टिफाई जो इन्होंने नकबा किया था. नकबा सबको पता होना चाहिए और मैं बता भी देता हूँ. इट इज द ग्रेट कैटास्ट्रफी. जब इजरायलीज पहले आए, इधर सेटल होना शुरू हुए ब्रिटिश मैंडेट के बाद, तो व्हाट हैपेंड वाज दैट अराउंड 750,000 पैलेस्टीनियंस वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स इनसाइड ऑफ पैलेस्टाइन. कुछ जॉर्डन चले गए, कुछ मिस्र चले गए, कुछ लबनान चले गए. आज भी अगर आप जाएं तीनों मुल्कों के अंदर तो आपको बहुत बड़ा पैलेस्टीनियंस का डायस्पोरा मिलता है जो उधर रह रहा है, बिलियंस के. और वो आज तक राइट ऑफ रिटर्न मांग रहे हैं जो कि इजराइल उनको डिनाई करता है. हालांकि आयरॉनिकली अपने अपने ही लोगों को, जूस को, ये राइट ऑफ रिटर्न देते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जूस हैं वो इजराइल वापस आ सकते हैं और उधर आके सेटल हो सकते हैं. बट दे डिनाई दिस वेरी राइट टू द पैलेस्टीनियंस जिनका वो होम था इन द फर्स्ट प्लेस. एनीवे, दिस इज जस्ट अ साइड. सो जब इन्होंने ये एस्टैब्लिश कर लिया तो नकबा इन्होंने किया. 750,000 पैलेस्टीनियंस को फोर्सिबली इवेक्ट किया अपने घरों से और वहां पे मिलिशियाज क्रिएट किए और वहां पे जुल्म और बर्बरियत की ऐसी मिसालें कायम की जो कि आज तक पैलेस्टीनियंस हर फोरम पे जाके लोगों को याद दिला रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे इन्होंने मजालिम किए हैं. एंड देन वी हैव द इंतिफादा, द फर्स्ट इंतिफादा एंड द सेकंड इंतिफादा. आपकी सॉर्ट ऑफ उन्होंने कोशिश की एक इंसरेक्शन करने की अगेंस्ट द इजरायली रजीम, जो कि टू मोस्ट पार्ट फेल हो गई. बट अगेन उसके अंदर काफी जुल्म हुआ पैलेस्टीनियंस के साथ. और फिर हम लोग आते हैं अक्टूबर 7 के पास. सो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आपको अक्टूबर 7 देखना होता है. अक्टूबर 7 आप उस वो जो वीडियोस आई थी कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है, उसके अंदर इजरायलीज हैं वो भाग रहे हैं और वहां पे बड़ा जुल्म कर दिया, वहां से आप तारीख नहीं शुरू कर सकते, आपको तारीख पीछे से शुरू करनी पड़ेगी. और फिर आप जाकर अक्टूबर 7 एंड देन टू करंट डे जब आप 40,000 डायरेक्ट कैजुअलिटीज ऑफ दिस जेनोसाइड दैट द इजरायलीज आर कैरिंग आउट, उसके पास आप आके पहुंचते हैं, खड़े होते हैं. So that's the basic context of the conflict that is going on. Very well explained, sir. Moving towards the second question.
Which fundamental rights are being violated in Gaza right now, and what is the status of infringement of these rights as per international law? Right. So I don't think that at the current moment there is any provision of international humanitarian law or human rights law that is not being violated inside of Palestine. I'll give you an example. The IDF or the Israeli Defense Force has uh, countless massacres on their watch that they have conducted. They have targeted homes, they have targeted hospitals, the famous Al Ahli and Indonesia hospital and the Al Shifa hospital. They have mutilated bodies. They have gone into people's homes, committed sexual assaults, heinous crimes. All of the, I think, this is just my opinion, humanitarian provisions of, you can look at, for example, I will give you the example of the four Geneva Conventions and the additional protocols. I mean, they have carried out everything underneath the sun inside of Palestine. All the war crimes, the crimes against humanity, crimes of aggression, genocide, everything. You can name it right now. And the threshold they've crossed. So, again, with regard to context. So, prior to October 7th, and I've talked about this in many interviews that I've conducted, there was a state of apartheid inside of Palestine. So if you were to look at the Apartheid Convention of 1973, its Article 2 and how it defines what apartheid is, uh, the one racial group oppressing another racial group, forced imprisonment, blockade, Gaza being an open-air prison, the United Nations actually declared this, and forceful evictions. These were things that qualified ongoing apartheid inside of Palestine already. And this is before October 7th that I'm discussing. Post October 7th, what we are witnessing is an absolute catastrophe. It is a genocide. By all means, you can read the Rome Statute of the International Criminal Court, how it defines genocide. It is a textbook definition of the genocide, what is happening inside of Palestine right now. So again, these are the examples of the atrocities that are being committed currently inside of in Gaza and the West Bank and East Jerusalem. Thank you so much, sir. How does international humanitarian law and international human rights law differ in their application in the situation of Gaza? So again, good question. What people have to basically realize is that international human rights law and international humanitarian law are two different branches. Yes, they might have similar goals in that they want to protect the rights of people, but the route that they take is different. So international humanitarian law, if I were to give you an example of normally जो हम लोग को पढ़ाया जाता है schools के अंदर और universities के अंदर कि अमेरिकन सिविल वॉर के बाद यूरोपियंस को ये ख्याल आना शुरू हुआ कि अब कुछ कवानीन बना लिए जाए जो कि वॉर को रेगुलेट करे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करे. तो लॉ ऑफ वॉर जो है बनना शुरू हो गया, एंड दैट सॉर्ट ऑफ culminated into what we have as international humanitarian law today. However, hamare as being Muslims, we already have a codified set of principles with regard to law of war जो कि Rasul sallam ने सेट कर दिए थे आज से 1400 साल पहले. ये एक वैसे साइड नोट में आपको दिखा. Human rights law is sort of international legal obligations आपकी होती हैं on countries towards their own citizens कि उनके हकूक हैं वो उन्होंने प्रोटेक्ट करने होते हैं. ह्यूमैनिटेरियन लॉ दो मुल्क या दो ग्रोह जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो तब अप्लाई करता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में. ह्यूमन राइट्स लॉ हर वक्त अप्लाई कर रहा होता है आपके लॉ ऑफ आपका राइट टू ह्यूमन डिग्निटी हो गया, एक्सेस टू जस्टिस का हो गया, इस तरह के आपके होते हैं. इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है एक बहुत फेमस डॉक्यूमेंट, आप पढ़ सकते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से. इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, ये आप पढ़ सकते हैं. और जो बेसिक हम लोग को पढ़ाया जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये इस तरह की कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो कि ह्यूमन राइट्स को ले डाउन करते हैं. ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके 4 जिनीवा कन्वेंशन है बेसिकली जो आते हैं,
और उसके 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आते हैं, जो कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने अपनी जो फौजें हैं या अपना जो आर्मी है उसको किस तरह रेगुलेट करना है आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो उसूल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के लॉ ऑफ वॉर के ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर सेट किए जाते हैं. दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन. Thank you so much, sir. What are the applicable international human rights law and conventions in the Gaza context, and through what means do they protect the civilians? So again, enforceability जो है आप करते हैं, आपकी 2 कोर्ट्स हैं. So you have this is also something that I would like to discuss. आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल आर्म है बेसिकली. 45 में 46 में इसको बेसिकली सेटअप किया गया था. और आपका फिर दूसरी तरफ है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि दोनों हेग के अंदर ही है, बट दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो मुख्तलिफ है. आईसीसी बेसिकली आपके यूगोस्लाविया के अंदर जो सिविल वॉर हुई थी उसके बाद इन्होंने सेट किया था 2002 के अंदर, और रोम स्टैट्यूट बेसिकली इसका है, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 1998. उसके बाद बेसिकली इसको सेट किया गया था जो कि इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है. ये वॉर क्राइम्स जो करते हैं, जेनोसाइड जो करते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हैं, रोम स्टैट्यूट के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है बाकायदा. दोनों का जरा लाए अमल मुख्तलिफ होता है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आपके पास एक प्रोसिक्यूटर होता है जिसको सबमिशंस दी जाती हैं. इंडिविजुअल भी दे सकता है, एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी दे सकता है, एक स्टेट पार्टी भी दे सकता है. प्रोसिक्यूटर फिर अज खुद उसको इन्वेस्टिगेट करता है और फिर जाके वो केस आगे चलता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीजे, वहां पे 2 स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको देखा जाता है. अभी जो फेमस केस है साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल जो कि चल रहा है इसी जेनोसाइड के ऊपर, जेनोसाइड कन्वेंशन उसके अंदर इन्वोक हुई है. कोई भी ऐसी कन्वेंशन जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइजरी क्लॉज है, जिसके अंदर ये कहा हुआ है कि अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट दोनों पार्टीज आईसीजे को रेफर करेंगी तो वो वहां से आईसीजे अपनी जुरिस्डिक्शन लेता है और फिर वो पार्टीज आईसीजे के अंदर जाके अपना केस करती है. इन दिस केस जो इजराइल और साउथ अफ्रीका वाला केस है उसके अंदर जेनोसाइड कन्वेंशन को इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट जुरिस्डिक्शन. सो ये बेसिक चीज है. हाँ, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ इंटरव्यूज में, आई रिपीट इट ओवर हियर. जस्टिस फॉर ऑल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोसिक्यूटर आईसीसी का जो है उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट ऑफ चीजें बनाई हुई हैं. आपके पास कोई सबमिशंस का आपका एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास तस्वीरें हैं, व्हाटएवर यू वांट टू सबमिट यू कैन सबमिट थ्रू देयर एज वेल. सो पीपल, आपकी अलमीजान, अलहक, बड़े बड़े आपके लॉ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं which have applied to the prosecutor of ICC, जो वहाँ पे humanitarian law की जितनी violations हुई है उसको सब मद्देनजर रखते हुए फिर ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें. ये अलग बात है कि मिस्टर खान जो है उनकी आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस लीनिंग्स जो है उनके ऊपर सवाल उठाया काफी लोगों ने, बट अगेन प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस है उसके अंदर यही बेसिकली होता है. और वहां पे फिर क्या कहते हैं, पहले रशिया के फॉर एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट्स निकले थे, ये जो यूक्रेन के अंदर वॉर से शुरू की थी. तो अगेन ये मिसाल फिर लोग दिया करते हैं कि द वेस्ट वाज वेरी फोर्थकमिंग in giving the warrants for Vladimir Putin when it came to the war in Ukraine, but they have delayed warrants for Netanyahu and his war cabinet when the war and genocide rather inside of Palestine is concerned. So again, dichotomy है बकायदा. ये अक्सर आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि अफ्रीका के अंदर जो आपके वॉरलॉर्ड्स हो गए या फिर जिसके खिलाफ वेस्ट काम करना चाह रहा हो वो उसका एक टूल बन जाता है और उसको दबाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है. बट अगेन इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी यूज्ड इफ यूज्ड करेक्टली to pressurize Israel into stopping this madness that they're currently committing inside of Palestine. Thank you so much, sir. What specific human rights conventions and treaties are applicable to the Gaza crisis, and how do they guide the protection of civilians? So again, जो मैंने लिस्ट डाउन की है आपकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अपार्थाइड कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कवरेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स है, आपके बेसिक चीजें आपकी रोम स्टैट्यूट को ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हवाले से उठा लें, आपका जिनेवा कन्वेंशन, एडिशनल प्रोटोकॉल्स, all of these conventions have been violated by Israel at this point. And ये अगेन मैं बार बार बताता हूँ, लोग कहते हैं कि
अगर ये वायलेट हो रही है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। कुछ होने का अगर आपने कुछ करना है तो दैट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल थॉट। उसके पीछे जब आप व्हेन यू बैक दीज थिंग्स, फॉर एग्जांपल आईसीसी के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल भी कह सकती है कि भाई प्रोसिक्यूट किया जाए प्रोसिक्यूटर को। सो you have to have political will and political pressure behind this as well. And for example, अगर मैं मिसाल देना चाहूँ कि how do you go ahead and protect the rights of Palestinians right now? So there is this doctrine जो कि United Nations General Assembly के अंदर सेट किया गया था, which is called the R2P doctrine or responsibility to protect doctrine. ये वेस्ट काफी दफा इन्वोक कर चुका है। लिबिया के अंदर स्पेशली इन्होंने किया था 2011 में गद्दाफी के खिलाफ। बेसिकली व्हाट दिस सेट्स इज दैट अगर कोई ऐसा ग्रुप है ऑफ पीपल जो कि पिस रहे हैं, जिधर जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रही है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, तो ये हर नेशन स्टेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जाके रोके। आया वो उसको सैंक्शंस के जरिए रोकता है, डिप्लोमेटिक मीन्स के जरिए रोकता है, पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए रोकता है, या मिलिट्री मीन्स के जरिए रोकता है, तो ये उस नेशन स्टेट के ऊपर है। बट R2P डॉक्ट्राइन को इन्वोक करना चाहिए इनको, ये इन चीजों को रोकने के लिए जो कि अभी फलस्तीन के अंदर हो रही है। और ये एक टेंजिबल तरीका है जिसके अंदर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, बजाय इसके कि आप जाएं OIC के अंदर तकरीर करके आ जाएं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर लंबी लंबी तकरीरें करके आ जाएं। प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने होंगे और उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के अंदर एक R2P डॉक्ट्राइन को इन्वोक करना है जो कि किया जा सकता है एट अ स्टेट लेवल। हाँ, अब उसके लिए आप पॉलिटिकल सपोर्ट गार्नर कैसे करते हैं, दैट इज अगेन ऑन द पॉलिटिशियंस टू डिसाइड। बट एक लीगल डॉक्ट्राइन एग्जिस्ट करता है R2P के तहत में, जो कि पहले इन्वोक किया जा चुका है वेस्ट की तरफ से। It is just on the political will of the nation states that want Israel to stop this madness inside of Palestine to invoke R2P. Very well explained, sir. Under what circumstances, if any, can a blockade or siege be considered lawful under international law, and how does this apply to the situation in Gaza? Again, इसराइल हमेशा बार बार UN चार्टर को इस्तेमाल करता है कि वी हैव द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। एंड अगेन उनके लॉयर्स काफी इस बात को टाउट बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं इस बात पे कि भाई वी हैव अ राइट टू डिफेंड आवरसेल्व्स। इवन अगर आप कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की आजकल तकरीर सुने तो उसके अंदर भी वो बार बार यही कह रहे होते हैं कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, वी सपोर्ट द राइट ऑफ इजराइल टू डिफेंड इटसेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए, राइट प्रोपोर्शनैलिटी का एक उसूल है जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में आपको फॉलो करना होता है। राइट टू डिफेंड योरसेल्फ यहाँ से शुरू नहीं हो सकता कि आप 40,000 लोगों का डायरेक्ट कत्लेआम कर दें इन कोल्ड ब्लड एंड यू से कि मैं अपने आप को आई वाज डिफेंडिंग माई सेल्फ। ये कहीं से भी लॉ के अंदर जस्टिफाई नहीं हो सकता। जो कि इजराइल करने की कोशिश करता है अपने एपैक एक जरिया है जिसके जरिए ये लोग करते हैं प्रोपेगेंडा, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। वहां पे बेसिकली व्हाट दे डू इज they go ahead and they do propaganda and they support candidates inside of the US and they fund their campaigns basically, जो election campaigns होती है, and through them they sort of propagate this propaganda कि we have a right to protect ourselves. Blockade की जहाँ से बात होगी, ब्लॉकेड वॉर के अंदर ये जो अभी इन्होंने लगाया हुआ है ये तो कंप्लीट रोम स्टैट्यूट के खिलाफ जाता है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आता है कि आप फूड मेडिसिन पहुंचने नहीं दे रहे लोगों के पास कंप्लीट। और ये अपार्थाइड के अंदर भी आता है, ये मैंने पहले जो आपको बात की थी कंप्लीट। ये तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, साफ साफ आपने ना पानी पहुंचने दे रहे हैं, ना खाना पहुंचने दे रहे हैं, ना मेडिसिन पहुंचने दे रहे हैं। वैसे रफा के अंदर आजकल जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन है, रफा इज ऑल्सो बीइंग क्लोज्ड नाउ। जॉर्डन के जरिए कुछ जो आपका एड है वो जा रही है इनसाइड ऑफ पैलेस्टाइन, बट दैट टू इजराइल उसको पता नहीं कितनी दफा वेट करता है और वो आगे भेजता भी है या नहीं, वो आखिरी प्रोरोगेटिव इजराइल के ऊपर है। It's completely illegal, completely illegal. Very well explained, sir. What are the human rights implications of prolonged blockades, particularly in the terms of access to essential services such as food, water, and healthcare? Again, ये वही वाली चीज है कि आपकी ब्लॉकेड हुई भी है, which is illegal. लोग कोशिश कर रहे हैं, अगेन दिस इज ऑन दी नेबरिंग कंट्रीज के वो अपने बॉर्डर्स खोले। लेबनान वाली साइड पे तो आपकी देयर इज नाउ स्पीकिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू,
लेबनान की तरफ से तो वी करंटली हैव ए कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, तो उधर से तो पॉसिबल है नहीं। जॉर्डन और इजिप्ट ही है जहां से यू कैन टेक ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू पैलेस्टाइन। So again, it is on the nation states of the world to diplomatically pressurize these countries, allowing aid to go inside of Israel and to force Israel to give the safe passage for aid to reach Palestinians inside of Gaza. Very well explained, sir. So moving towards the next section. जी So what are the challenges in bringing cases of human rights violation in Gaza to the international courts, and what legal mechanisms such as the International Criminal Court or the tribunals exist to prosecute alleged war crimes and human rights violation? राइट, तो अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आईसीसी के हवाले से, आई लाइक दैट यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप। अमेरिका और इसराइल दोनों ही आईसीसी के पार्टी नहीं है, एंड अगेन ये हम लोगों को पता है कि क्यों नहीं है, बिकॉज सारे मजालिम मोस्टली अमेरिका जो है अफगान वॉर, वियतनाम वॉर, इराक वॉर, उसके अंदर जो उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम की है वो अपनी जगह है। इवन जो उन्होंने लिबिया के अंदर इंटरवेंशन की थी उसके अंदर जो मजालिम किए थे, एंड इसराइल जो कि कॉन्स्टेंटली पिछले तकरीबन 75 साल से जो कर रहा है फलस्तीन के अंदर वो। एंड व्हाट द प्रॉब्लम दैट इज कि जब तक आप पार्टी नहीं है आईसीसी के, आप यू कैन नॉट बी अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। हाउएवर 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इसराइल को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्टी बन सके, जिसके बाद से यस नाउ आईसीसी जुरिस्डिक्शन ले सकता है जो पैलेस्टाइन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके हवाले से, जिसकी वजह से अब प्रेशर डल रहा है आईसीसी के ऊपर कि भाई आपका प्रोसिक्यूटर उसको इन्वेस्टिगेट करे और आगे बढ़ाई जाए इसके अंदर बात। अगेन इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू और हमास के जो लीडर्स हैं उनके लिए भाई हम वारंट जारी करेंगे। Whether that is proportional and whether that is justified, that is again something for jurists to argue. But again, ये एक अब तरीका है आईसीसी के जरिए प्रेशराइज करना नेतन्याहू को, नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट को, उनके खिलाफ वारंट्स को जारी करवाना और उनको फिर अरेस्ट करवाना। ये तरीका है जिसके जरिए आप एक टेंजिबल सोल्यूशन दे सकते हैं लोगों को। काफी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहां पे ओपनली उन्होंने उनकी स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि अगर नेतन्याहू हमारे पास आया तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। सो अगेन यूरोप के अंदर भी वी आर नाउ सीइंग के एक थोड़ा सा डिवाइड पैदा हो रहा है इन दी प्रोटेस्टेंट स्टेट्स एंड द कैथोलिक स्टेट्स के कौन इजराइल को सपोर्ट कर रहा है अभी भी इन लाइट ऑफ ऑल द जो जुल्म वो कर रहे हैं, एंड कौन इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। they've left the Israeli ग्रुप और क्लब बेसिकली। तो ये अगेन है तरीका आईसीजे के अंदर इफ कंट्रीज गो एंड दे बिकम अ पार्टी टू इट, जो कि वहां पे केसेस चल रहे हैं, यस दे शुड। पाकिस्तान के हवाले से अगर आप पूछे, पाकिस्तान कैन बिकम पार्टी टू द आईसीजे प्रोसीडिंग्स, एंड पाकिस्तान शुड आल्सो एट अ स्टेट लेवल ट्राई टू pursue the prosecutor of the ICC। दोनों चीजें की जा सकती है। Very well explained, sir. To what extent does the principle of universal jurisdiction apply to the human rights violation in Gaza, and how can other states and international entities play a role in pursuing justice? Again, I would again invoke these three things: R2P, responsibility to protect, जो मैंने आपको पहले बताया, ICC and ICJ का फोरम को आप इस्तेमाल करें बार बार। These are legally speaking ये वो फोरम्स हैं जिनके जरिए आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकते हैं, बजाय इसके कि again the Americans are trying to broker this deal with using Egypt and Qatar to sort of bring a ceasefire। I don't think कि उसकी जो provisions होंगी will be
फेवरेबल टू द पैलेस्टीनियंस, जो कि अपनी आया जाने अभी खो रहे हैं या खो चुके हैं। तो अगेन ये 3 फोरम्स इनको इस्तेमाल करना एंड देन आगे जाके अपना R2P को इन्वोक करना। ये बार बार मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन यही है, ICC में जाएं, ICJ में जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट को इन्वोक करें और डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर जहां पे भी आप डाल सकते हैं उसके जरिए रुकवाएं इस कॉन्फ्लिक्ट को। Very well explained. What legal remedies are available for the civilian affected by the military operations in Gaza, and how effective has the United Nations been investigating and addressing human rights violations there? अगेन ये भी एक डेवलपिंग सिचुएशन है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एंड हाउ इफेक्टिव हैज द यूनाइटेड नेशंस बीन। ये लोगों को पता होना चाहिए कि अब फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर इजराइल वही कर रहा है जो कभी ये लोग इल्ज़ाम लगाते थे नाज़ीज़ के ऊपर कि इन्होंने हमारे साथ होलोकॉस्ट में किया। और वो क्या है कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप शुरू कर दिए हैं जिधर ये विदाउट चार्ज, विदाउट ट्रायल फ़लस्तीनी बच्चे, फ़लस्तीनी माएँ, बहनें, बुजुर्ग सबको बंद करके इन्होंने रखा हुआ है जानवरों की तरह। और फिर उसके ऊपर उन्हें टॉर्चर की बाकायदा हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि उन लोगों के साथ टॉर्चर हो रहा है। अभी रिसेंटली एक इशू बना था, IDF के मेंबर्स थे जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था, एंड वो क्या कहते हैं, दे वर नॉट ट्राइड। उनके बाकायदा जो इसराइल का कैनेसेट है या उनका जो आप समझ लें नेशनल असेंबली है, वहां पे बाकायदा डिबेट्स हुई थी कि पैलेस्टाइन के खिलाफ कुछ भी किया जाए, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो टॉर्चर हो, तो वो जस्टिफाइड है। ऐसी ऐसी डिबेट्स उन्होंने की है अपने लेजिस्लेटिव साइड के ऊपर। और वहां पे बहरहाल अब चल रहा है, कंसंट्रेशन कैंप्स भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी टॉर्चर सेल्स जो है वो भी चला रहे हैं। एग्जैक्ट जो ग्वांटानामो के अंदर अमेरिकन किया करते थे, और अभी भी खैर ग्वांटानामो तो अभी भी चल रहा है, बट जब ये अफगान वॉर अपने उरूज पे थी, वो ही फॉर्मूला या इराक के अंदर जिन्होंने किया था फेमसली ना, तो वही फॉर्मूला वो यहाँ पे चला रहे हैं। Very well explained, sir. What legal reforms or new international agreements might be necessary to better protect human rights in Gaza? And what measures can be taken to hold Israel and international community accountable for their actions and inactions? वेरी सॉरी, एक दफा फिर से रिपीट करिएगा प्लीज। Okay. What legal reforms or new international agreements might be necessary to better protect human rights in Gaza? And what measures can be taken to hold Israel and the international community accountable for their actions or inactions? Again, same answer. R2P, ICC, and ICJ. That is how you bring the war cabinet of Netanyahu into account. You bring Netanyahu himself into account. You bring the people that are complicit inside of this genocide into account. If you want to bring the Israeli state into account, you go to the ICJ. If you want to bring the individuals into account, you go to the ICC. And if you want to stop what is going inside of Palestine, you invoke the R2P doctrine. Simple answer. These are all questions of the same root. Thank you so much, sir. So, if you permit, तो हम क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में जा सकते हैं? Question answers live? Yes, sir. Please. Okay, sir. A question from Hafsa. Pro-Zionist arguments often cite biblical claims to justify the occupation, asserting that the historical connection to the land outweighs the right of the Arab residents, particularly those who migrated post-1960s. From a legal standpoint, do these claims hold any validity? Again, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप जाके इनकी जो है तनाख भी देख लें, इलीगल भी देख लें। आई कैन पास रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आई कैन कोट देम, गिव यू गाइस, आप लगा सकते हैं। पूरा वक्त जो बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी है जहां से निकली है, ये ज़ायनिज़्म एक। और बाय द वे, ये मैं कोट करना भूल गया, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है
3379. ये आई वुड लेट द पीपल ये जाके इसको रिसर्च करें. जायनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको बकायदा एक रेसिस्ट आइडियोलॉजी इंटरनेशनली डिक्लेयर किया जा चुका है. इसमें वोट हुआ था, इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये रेसिस्ट आइडियोलॉजी है. और ये क्यों है रेसिस्ट आइडियोलॉजी? बिकॉज ये कंफ्यूजन पैदा की गई है कॉलोनियल एरा के अंदर कि एक स्टेट है जिधर इसराइलीज जाएंगे और उसको क्रिएट करेंगे और वहां पे फिर एंड ऑफ टाइम्स आ जाएगा और किंगडम ऑफ हेवन जो है वो आ जाएगी और यू नो एंड ऑफ टाइम्स विल बी हियर. Again, this is all malarkey and this is Zionist propaganda जिसकी वजह से justify करते हैं Israel. If you were to look at Jewish scripture, there is nowhere in the Jewish scripture is this written down that Jews have to go and build the state of Israel themselves. This is a innovation by the Israelis that we are required to build the state of Israel ourselves. In opposition to what the scripture says, which is that the Israel will be established, quote unquote, by God Himself. So again, ये एक क्या कहते हैं चेंज है जो कि इन्होंने अपनी बेसिक आइडियोलॉजी में किया है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इजराइल. और ये जायनिस्ट ने ज्यादातर किया है. और फिर एक और चीज भी है, क्रिश्चियन जायनिस्ट हैं अमेरिका के अंदर जो कि सपोर्ट करते हैं इजराइल. अब आप सोचें कि भाई ये एक सवाल पैदा होता है कि क्रिश्चियंस का नौजुबिल्ला हमारे लिए उनका जो खुदा है वो हज़रत ईसा थे. वो पिछले हजारों सालों से अगेन दे अपोज्ड a creation of a Jewish state inside of Israel. However, now अब वो एकदम से सपोर्ट करने लगे हैं. तो उसकी क्या वजह है? बिकॉज वो हिल ऑफ जायन की उन्होंने एक आइडियोलॉजी जो है वो अपनी इनसिंक कर ली है जायनिज्म के साथ कि आप जाएं और आप क्या कहते हैं स्टेट ऑफ इसराइल को एस्टैब्लिश करें. वो होगा तो हजरत ईसा का ज़हूर होगा. हजरत ईसा का ज़हूर होगा तो फिर किंगडम ऑफ हेवन बनेगी, फिर हम लोग सारे जन्नत में जाएंगे. सो दे सॉर्ट ऑफ कन्फ्लेटेड दिस आइडिया विच ईच अदर वो दूसरे की यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स. तो ये चल रहा है. So we have another question from Hafsa. Let me straight. Hafsa asked that supporters of Israel sometimes argue that the concept of terra nullius, land belonging to no one, applies to the territory prior to the establishment of Israel, thereby justifying its claims. Legally, how credible is this argument in the context of international law and historical evidence? This argument again मैंने शुरुआत ही इसीलिए यहाँ से की थी because this argument does not stand. What they like to do is they say that this place was a land without a people for a people without a land, and this is the basic pillar of the Zionist ideology, which is completely false. मैंने जो पूरी तमहीद बांधी थी कि पैलेस्टाइन एक रीजन है, कैनानाइट से लोग डिसेंड करते हैं, हमेशा रहा है. रोमन प्रोविंस भी था, बिजंटीन प्रोविंस भी था, 1000 सालों के लिए मुसलमानों के जेरे दस्त फलस्तीन एक प्रोविंस था, सूबा था, रहा. पैलेस्टाइन एक रीजन है जो कि वहां पे हमेशा से एग्जिस्ट करता है. और फिर जो दूसरा ये लोग बैलफोर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, वो अपनी एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटी को मिक्स कर देते हैं, कन्फ्लेट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं. लाइक एनी अदर रिलीजन, आपकी काफी एथनिसिटीज हैं जो कि जूज हैं, जो कि जुडाइज्म को फॉलो करती हैं. That does not in any way justify legally कि आप जाके एक इलाके को कब्जा कर लें, कॉलोनाइज कर लें. बिकॉज अगेन ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जो कि इसराइल का आप अभी देख रहे हैं पैलेस्टाइन के अंदर. कॉलोनाइज करें, वहां के लोगों को इलीगली निकालें. अगेन दिस आई वुड लाइक टू कोट दिस एज वेल. आपकी आर्टिकल 49 ऑफ द 4th Geneva कन्वेंशन, ऑक्यूपाइंग पावर अपने लोगों को किसी भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर नहीं ला सकती. और ये रेलेवेंट वेस्ट बैंक के हवाले से भी है जो वहां पे सेटलमेंट से लोग बनाते हैं. और इनिशियली जब ये लोग आए थे तब भी रेलेवेंट था अगर रेट्रोस्पेक्ट में अप्लाई किया जाए. आप जा ही नहीं सकते. आप जाके ऑक्यूपाई करके लोगों को सब्जुगेट कर रहे हैं, लोगों के राइट्स आप ले रहे हैं, उनको इफेक्टिवली अपने आबाई इलाकों से निकाल रहे हैं, धकेल रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई दिस वाज अ गॉड गिवन राइट. ये तो दिस इज कंप्लीट प्रोपेगेंडा. ये जो कि जायनिस्ट पता नहीं कब से प्रोपेगेट करते रहे पूरी दुनिया के अंदर. Very well explained, sir. Another question is from Hafsa Khan. Supporters of Israeli sometimes argue that the concept of terra nullius,
land belonging to one, land belonging to no one, applies to the territory prior to the establishment of Israel, thereby ये justifying its claim. ये वाला सवाल अभी कर दिए, इसी का जवाब दिए अभी। Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. How do international humanitarian law and human rights law apply to the Gaza Strip, considering its unique status as a non-occupied yet blocked territory? अगेन यूनिक स्टेटस की वजह से ह्यूमैनिटेरियन लॉ की एप्लीकेशन रुक नहीं जाती। आपकी ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज नॉट बाउंड बाय बॉर्डर्स, इट इज बाउंड बाय आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिधर भी होगा, दो स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, एक स्टेट अपने अंदर किसी आर्म्ड ग्रुप से लड़ रहा है, या कुछ आर्ग्यू ये भी करते हैं कि आर्म्ड ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, तो लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विल बी एप्लीकेबल। रोम स्टैट्यूट एप्लीकेबल है, अपार्थाइड कन्वेंशन एप्लीकेबल है, ये जेनीवा कन्वेंशन चारों और उनकी एडिशनल प्रोटोकॉल्स एप्लीकेबल है। सो ये आर्ग्यू करना, और स्पेशली अब तो 2012 की जो स्पेशल स्टेटस पैलेस्टाइन को मिल चुका है, उसके बाद से अब आर्ग्यू करना कि भाई पैलेस्टाइन एक स्टेट नहीं है, इट कैन बिकम पार्टी टू इंटरनेशनल कन्वेंशंस, तो वो स्पेशल क्या कहते हैं स्टेटस जो है वो अब ऑलमोस्ट इट इज नाउ ए फुल मेंबर, तो वो तो अब नहीं रहा। कोई और सवाल है? Sir, I think there is some sort of internet issue at Aqsa's end. Hafsa Adil has asked another question. What practical steps can international human rights advocates take to securely document and preserve evidence of war crimes in Gaza, particularly in areas with restricted access? And how can this evidence be systematically presented in international courts like ICC to overcome challenges of admissibility and credibility? This is a very it's a relevant question, जो कि अच्छा किया आपने पूछा। मैंने ये पहले भी कवर किया था, बट आई रिपीट माई सेल्फ। जस्टिस फॉर ऑल एक वेबसाइट है, इसको जाकर जरूर देखिएगा। उन्होंने वहां पे पहले से ही फॉर्म बनाया हुआ है कि कहाँ पे तस्वीरें लगानी है, कहाँ पे वीडियोस लगानी है, कहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट्स करनी है, सबमिशंस करनी है। आप जाएं उधर सबमिशंस करें। आपका इदारा है, आप इंडिविजुअल हैं, आपका कोई ग्रुप है, जीओ है, वो ओवर देयर मेक योर सबमिशंस आईसीसी के प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के ऊपर, और उनको बताएं कि जाके अगर आप नेशन स्टेट के ऊपर नहीं उनको कह सकते अपने मुल्क को कि भाई यू गो एंड यू ये through Security Council या on your own accord require the prosecutor to follow through with the investigation. आप लोग जाएं, आप वहाँ पे अपनी submissions करें और वहाँ पे कहें उनको urge them to follow through with the investigation. उधर बकायदा जस्टिस फॉर ऑल की आप वेबसाइट पे जाएं तो उधर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसेस सारा बताया हुआ है, किधर तस्वीरें लगानी है, किधर वीडियोस लगानी है। यू कैन गो ऑनलाइन, आपके बकायदा रिपोजिटरीज बनी हुई है जहाँ पे लोगों ने पहले से सेव किया हुआ है, इंटरनेशनल पैलेस्टाइनियन ऑर्गेनाइजेशन ने सेव करके रखी हुई है ये सारी वीडियोस, वहां से भी आप निकाल के अपनी सबमिशंस कर सकते हैं। दिस इज अगेन बजाय इसके कि महज सोशल मीडिया पे बैठ के तस्वीरें लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप कंपाइल करके सबमिशंस करें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस को। Be a part of the change rather than sitting on the sidelines. Exactly, sir. So Mehak Meher has asked another question. Can you discuss the legal implications of Israeli settlement expansion and construction of the separation barrier in the West Bank? It is जो आपकी सारी settlements हैं, all the settlements inside of the West Bank are illegal. They have been declared illegal by the United Nations as well, internationally as well. They go against the Apartheid Convention. They go against the Rome Statute itself. सारी आप किसी भी टेरिटरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे अपने लोगों को रीसेटल नहीं कर सकते, डेमोग्राफी आगे पीछे नहीं कर सकते, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां की आवाम को प्रोटेक्ट करना।
completely against international law what is happening inside of West Bank. So यही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर आप गजा के अंदर अभी जेनोसाइड देख रहे हैं तो आप वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम के अंदर अपार्थाइड तो पहले से देख ही रहे थे और आज भी देख रहे हैं। ठीक है, वहां पे ये लोग मिसाइल नहीं मार रहे, ठीक है, वहां पे भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे, जेनोसाइड नहीं कर रहे, बट वहां पे अपार्थाइड का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत पहले क्रॉस हो चुका है और वहां पे वो अभी यही स्टेट ऑफ अफेयर्स है। एग्जैक्टली लाइक जो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका था उसी तरह के इन्होंने रूल्स वहां पे लागू किए हुए हैं। चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहां से आप गुजरते हैं, देयर आर सर्टेन टाइम पीरियड जिसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं ट्रैवल कर सकते, सर्टेन एरिया जहां पे आप काश्तकारी कर सकते हैं नहीं या नहीं कर सकते। These are all against international human rights law and international humanitarian law. So अपार्थाइड कन्वेंशन अप्लाई कर रही है इधर, रोम स्टैट्यूट की खिलाफ वर्जियां यहाँ पे ओपनली हो रही है। Very well explained, sir. Hafsa Adil has asked another question. Is there any legal way to stop the weapons being sent to Israel by the US and other supporters? दो ही तरीके हैं जो आप अगर इंडिविजुअली पूछना चाहें तो आप क्या कहते हैं, आई स्टार्ट विद द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे प्रेशराइज योर गवर्नमेंट्स इनटू इम्पोजिंग सैंक्शंस। अगर हर कोई सैंक्शंस करेगा और हर कोई इनसे ट्रेड करना रुक जाएगा तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, दे विल स्टॉप सेंडिंग आर्म्स। काफी मुल्क है इवन वेस्ट के अंदर, अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने दे स्टॉप्ड शिपमेंट ऑफ कोल टू आई बिलीव इजराइल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि अब आर्म्स इनको नहीं भेज रहे। अगेन ये एक मॉरल अथॉरिटी है, इसको लीगली इन्फोर्स कराना किसी और मुल्क के ऊपर वो इतना इजी नहीं है। आप सैंक्शंस के जरिए कर सकते हैं, आप ट्रेड रोक के कर सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे पूछें तो बॉयकॉट के जरिए कर सकते हैं। एनी एंड ऑल कॉर्पोरेशंस दैट हैव एनी लिंक विद द इजरायली regime, एनी लिंक विद Zionist elites, आप उनके प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। इट हैज एन इफेक्ट। लोग पहले जब बॉयकॉट शुरू हुए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारा अपना बिजनेस जाएगा, बट व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि नए कंपनीज पैदा हो गई, डोमेस्टिक ब्रांड्स आगे आने लग गए, और जो ये कॉन्ग्लोमरेट्स थे और होल्डिंग कंपनीज बड़ी बड़ी बनी हुई थी, दे स्टार्टेड टू गो इनटू लॉस। सो इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, और उससे फिर आगे नतीजे भी निकलते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। बिल्कुल ठीक सर। Mr. Mohammad Shahir has asked a question, and he says that there is a perspective that Pakistanis not being able to travel to Palestine, Israel region on the Pakistani passport in far sight is a way in which the country has tried to become clear of its responsibility to the Palestinian people, as access to the region opens more opportunity to assist them. What do you have to say in this regard? If you agree, can one legally claim the right to travel to Palestine as a Pakistani citizen, which may allow the Pakistani nation to help the Palestinians? So, legally claiming this right, I don't think that would be the appropriate mode of action over here. What the appropriate mode of action would be is, in my opinion, would be Jordan, Lebanon, and Egypt. They should be brought on the table, and they should be sort of talked to and made to agree that they should allow people to come into their side of the border, resettle over there, because again उधर भी यही मसला है कि वो चाह नहीं रहे कि रेफ्यूजीज हमारे पास आ जाएं। अब्दुल फताह सीसी ये सोच रहा है कि मेरी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी, किंग अब्दुल्ला जॉर्डन में भी यही सोच रहा है कि मेरी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाएगी अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लो हुआ पैलेस्टीनियंस में। एंड दे सॉर्ट ऑफ ट्राई टू जस्टिफाई, हीरो बनते हैं कि हम लोग इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि हम नहीं होने देंगे कि फ़लस्तीनी यहाँ से अपने इलाके को छोड़ के जाए, पर इन रियलिटी उनको अपनी हुकूमतों का डर लगा हुआ है कि अगर ये आ गए तो हमारी हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। तो हम लोगों को इन दो मुल्कों को, जॉर्डन और इजिप्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है वेस्ट बैंक और गजा से, इनको आप टेबल पे लाएं और इनसे कहें कि भाई बॉर्डर अपना खोलें। आपको इसराइल के अंदर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से इनके बॉर्डर के जरिए इनकी मदद कर सकते हैं। तो इनको कहें, इनको जाके कहें कि अपने बॉर्डर्स खोलें, वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचने दें और वहाँ से रेफ्यूजीज को अपने इलाकों में आने दें। डेजिग्नेटेड एरियाज बनाएं जहाँ पे रेफ्यूजीज को रिसेटल किया जा सके, जहाँ पे उनको एटलीस्ट कोई रेस्पाइट मिल सके। आपने तो अभी एक बुचर ग्राउंड बनाया हुआ है जिधर बेचारे बच्चे औरतें बूढ़े फंसे हुए हैं, और ऊपर से इजरायलीज आके कारपेट बॉम्बिंग किए जा रहे हैं और आपने बॉर्डर बंद किया हुआ है। सो अगेन
the border at Rafah needs to open, and the border between Jordan and the West Bank needs to open to allow people to come and forth freely, at least. Very well explained, sir. Ms. Mehak Meher has asked another question. How does international law address the issue of Palestinian political prisoners and detainees in Israeli prisons? Sir, am I audible? I think there is some sort of issue at the speaker's end. We'll be एक getting back. सेकंड रुकिए, ये कोई नेट का इशू हो रहा है बार बार. No worries, sir. Sir, I'll repeat the question. Ms. Mehak has asked that how does international law address the issue of Palestinian political prisoners and detainees in Israeli prisons? So this is completely against the आपका international covenant on civil and political rights, international covenant on economic, social, and cultural rights. आपका जो humanitarian law के अंदर set किया गया है, you can look at Geneva Convention as well. कहीं पे भी concentration camps की इजाजत नहीं दी गई. Internship का concept है कि आप अंडर ड्यू प्रोसेस लोगों को इंटर्न कर सकते हैं अगर आपको ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा थे या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का क्या, विदाउट चार्ज सिविलियंस को पकड़ के रख रहे हैं, विदाउट ट्रायल उनको काफी अरसे तक रखा हुआ है, बच्चों को, माइनर्स को रखा हुआ है, बुजुर्गों को रखा हुआ है. ये कहीं पे भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर यू हैव टू लुक एट द फोर जेनेवा कन्वेंशन और द एडिशनल प्रोटोकॉल्स, वहां पे आपको उसका जवाब मिलेगा. इंटर्नशिप यस, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स नो, कहीं पे भी इसकी इजाजत नहीं है, जो कि अभी हम लोग विटनेस कर रहे हैं. प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के साथ साथ आपका टॉर्चर सेल्स भी इन्होंने बना दिए हैं, जो कि कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंदर उनकी इजाजत नहीं है. सो ये आपका आर्टिकल 33 ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन गालिबन बनता है. तो ये कहीं पे भी इन चीजों की इजाजत नहीं है. दिस इज अगेंस्ट ऑल प्रोविजन, जहां से मैंने बात शुरू की थी, ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स लॉ. कहीं पे भी नहीं है इजाजत. Sir, very well explained. Sir, thank you very much. These were all the questions from the audience's side, and we have completed the questions from the questionnaire and the audience's questions as well. And Alhamdulillah, it has been an excellent session. Sir, very pertinent questions have been answered, and it in an excellent manner. This has truly been an eye-opening session and a very insightful session. Sir, do you have any final remarks in this regard? Final remarks. I'll try to do my best. So thank you very much Law Student Council, मोहम्मद शहीर, स्पेशली आपकी जो बाकी टीम है, तलहा साहब और ये मैडम का नाम मैं भूल रहा हूँ, मिस काजी गालिबन. आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ क्या कहते हैं इंटरव्यू करने का. आपकी जो पिछली लीडरशिप है, शाहजेब साहब, सलाउद्दीन साहब, वो उनके साथ भी दोस्ती है. यू गाइज आर डूइंग वंडरफुल वर्क और यही चीज करते रहिएगा. बिकॉज देखिए, रेलेवेंट टॉपिक्स पे बोलना कभी कभार लाजमी हो जाता है, स्पेशली पैलेस्टाइन के केस के ऊपर. एंड आपके लिए बाकायदा आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि यू आर वन ऑफ द पीपल एंड वन ऑफ द ग्रुप्स दैट आर ट्राइंग टू हैव इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस, प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस ऑन सच इश्यूज. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऐसे टॉपिक्स चुन रहे हैं और आप इस पे लोगों को बुला भी रहे हैं, मदू भी कर रहे हैं और उनसे सवालात भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं. पढ़ के आप लोग आते हैं, which is always nice to have an interview. With regards to Palestine, one last thing that I would like to leave the people with is, please do not lose hope. Please do not be cynical. Yes, the situation inside of Palestine is dire. It is gruesome. Sometimes, hopelessness might creep in, but try to avoid it and try to push it out. And the reason why I say is that the conflict in Palestine, however bad it may be, and however bad and dire the situation may be, it has allowed the world to open their eyes towards the hypocrisy and the lies that we have witnessed for the last 50 years, especially in light of the war on terror that the United States propagated. People are no longer believing the lies that have been propagated by the Zionist elites,
and the political elites inside of the West to justify their wars and their war crimes and their crimes against humanity, just for whatever benefits they have via their military-industrial complex or via their election campaigns or whatever that may be. What the responsibility that you have individually is continue to boycott, continue to speak about this, continue to go into, if you can, have interviews, continue to speak in forums wherever you can, raise your voices for this cause. This is at least it is a responsibility as a human being. It is a responsibility as a Muslim. It is a responsibility as a Pakistani. Constitutional responsibility भी है ये, by the way. तो आप बोलते रहें, आप सपोर्ट करते रहें. अगर आप एड भिजवा सकते हैं, if you know any relief organizations that are still sending aid, donate as well. Whatever you can do, अपने हिस्से की शम्मा जलाए रखें और होपलेसनेस में मुब्तला ना हो. काफी लोग ऐसे ऑनलाइन हैं जो कि होपलेसनेस को स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, आंखें बंद करके बैठ जाओ, तस्लीम कर लो, हम बहुत कमजोर हैं, वगैरह वगैरह. इग्नोर दम. आपने अपनी हिस्से की शम्मा जलाए रखनी है, अपना हिस्सा अदा करते रहना है, और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि slowly and steadily the world is coming to the realization and people themselves are coming to the realization कि हक क्या है और बातिल क्या है. Thank you. Sir, very well said. Sir, thank you very much for the praise and thank you very much for being on this session. We are absolutely honored for having you on the session and it was a really insightful session. और ये है कि बड़े ही इसमें पर्टिनेंट सवालात जो हैं उनका बड़ा ही एक बेहतरीन किस्म को हमने उनको जो है वो आंसर किया है. Sir, moving towards the close, thank you very much for your invaluable expertise with us, sharing with us today. On behalf of the Law Thank you. Firms Council, I would like to express our gratitude for your participation in this webinar. And Thank you. ladies and gentlemen, I would like to extend my sincere appreciation to our audience for their active engagement and collaboration throughout the session. Your presence and participation have made this webinar a resounding success. I hope that you have found the session informative and enlightening and that you will carry away valuable insights from our discussion today. We'll be back soon with a very informative session. And until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.